Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So in this video, we are going to discuss about a very important topic of pediatric nursing, that is APGAR scoring, right? So in this video, हम discuss करेंगे what basically APGAR scoring is, what are the different components of APGAR scoring, and how we use it in the cases of the objective assessment of the newborn, right? So to begin with the introduction of what is APGAR scoring, right? So APGAR scoring is the objective assessment of newborn. So what basically objective assessment means? Objective assessment का मतलब होता है जो एक other individual किसी और की assessment कर रहा है, right? So we are going to objectify, we are going to evaluate the condition of a newborn baby, right? So with the help of this score, what we assess is how well the newborn is responding to the extrauterine life, right? So जब तक baby born नहीं होता है तब तक baby is in utero, ठीक है? उनका baby का environment different है. So when the baby is born, baby takes some time to adapt to the extrauterine environment, right? Extrauterine life में adapt करने के लिए newborn requires some changes, ठीक है? So just to check how well that evaluation is occurring, how well the transition of the baby from intrauterine life to extrauterine life occurs, this is why we use the APGAR scoring, right? So APGAR scoring किसने दी थी? This score was given by Virginia APGAR, right? In which year? In the year 1952. 1952 में Virginia gave this scoring, which is named after her, which is APGAR score. Now in this video हम क्या discuss करेंगे? इस score के 5 components को we will discuss, and how we assess that 5 components. Everything will be discussed, and how we interpret this score will also be explained in this video. So here it starts, right? So सबसे पहला component APGAR score का आता है appearance, right? Second component pulse, third is grimace, fourth is activity, and fifth is the respiratory effort. Most of the students do a mistake. We take this respiratory effort as respiratory rate, which is wrong. APGAR scoring में R stands for the respiratory effort, as most of the students are confused in this concept. So यहीं से सबसे ज़्यादा questions put up होते हैं, right? So how we do the scoring? जो APGAR scoring के पांचों components की scoring है, it is either 0, 1 और 2. मतलब हर component का maximum score 2 है, minimum score 0 है. And दो यहाँ पे कितने components है? 5 components है. So the total score, maximum score comes out to be 10. 2 into 5, right? So हर component का maximum score 2 है, minimum score 0 है, right? So first thing is, अब हमें objective assessment करना है किसी newborn का. So first component जो हम assess करेंगे, it will be appearance, right? So appearance में क्या assess किया जा रहा है? baby का color, right? If the baby is pink in color, कोई भी signs of hypoxia नहीं है, ठीक है? The skin colors appear absolutely normal, we give scoring of 2, ठीक है? What do we do in the case if the score is 1? अगर score 1 देना है, then what will be the condition of the baby? ठीक है? Then the baby has acrocyanosis, right? हम 2 score कब देंगे? जब baby fully pink होगा, full blood supply होगी, कोई भी sign of cyanosis नहीं होंगे. When do we give the score 1? We give the score 1 when the baby has acrocyanosis, right? Acrocyanosis means either the hand or the feet are cyanosed. मतलब peripheral circulation impairment का एक symptom होता है acrocyanosis, जिसमें क्या होता है? Peripheral cyanosis हो जाता है. And if the baby is completely cyanosed, then we give the score of 0. ठीक है? अगर baby में cyanosis, full body cyanosis, I mean central, peripheral, full cyanosed body है, then we give the score of 0. ठीक है? So baby के appearance के base पे हम 2 score कब देंगे? जब skin pink होगी, जब acrocyanosis होगा, we give the score of 1, and when the baby is completely cyanosed, we give the score of 0. ये था इसका पहला component, right? Then comes the pulse. ठीक है? Pulse. अब pulse में क्या होता है? If the pulse is present and is more than 100 beats per minute, right? If the pulse is present and it is more than 100 beats per minute, ठीक है? Then we give the score of 2. अगर
present है but less than 100 है, then we give the score of 1, right? If the pulse is present but less than 100 beats per minute, then it is called as, then we give the score as 1, right? अगर pulse बिल्कुल absent है, then we give a score of 0. ठीक है, ये second component था which is pulse rate. एपगार में पहला was appearance, second is pulse. Now third is grimace और reflex. अब इसमें क्या होता है, grimace या reflex assess करने के लिए what we do is, हम या तो बेबी को little tap देते हैं on the sole, ठीक है, या फिर हम oral और nasal suction करते हैं बेबी का. If you do the suction and the baby starts crying and gives a full reflex response, ठीक है, जब आपने बेबी का क्या किया, suction किया, then the baby had a reflex of, baby coughed, the cough well, the baby coughs well, the baby has gag, right? That means the patient has good reflexes, ठीक है, protective reflexes present है बेबी में, then we give the score of 2, ठीक है. अगर आपने suction किया, सोल पे टैप किया, then the baby just shows the grimacing on the face. If the patient is just showing grimace, grimace is like annoying expressions. The baby looks very annoyed, ठीक है, sort of grimace is seen on the baby's face, means some kind of reflex is present, but you will award the baby a score of 1. If there is no reflex, no cough, no gag when you suction the baby, then we give a score of 0. That means no reflex. ठीक है, उसके बाद आता है activity. Activity में if the baby is very active, upper and lower extremities क्या है, fully toned है, full flexion में है body, ठीक है, the baby's body is in full flexion. We know that if the baby is normal, the muscle tone will be flexed, ठीक है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो प्राइमरीली फ्लेक्स्ड रखता है अपनी एक्सट्रीमिटीज को. अगर अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज कंप्लीटली फ्लेक्स्ड है, दैट मींस द बॉडी इज नॉर्मल, ठीक है, वी विल गिव द स्कोर ऑफ 2. अगर द बेबी हैज सम पार्शियल फ्लेक्शन, ठीक है, अगर पार्शियली फ्लेक्स्ड है, देन वी गिव द स्कोर ऑफ 1. एंड इफ द बॉडी इज फ्लेसिड, अगर बॉडी कंप्लीटली फ्लेसिड है, ठीक है, then we give the score of 0. अगर complete flexion है 2, partial flexion है 1, and if the body is completely flaccid, then we give a score of 0. This was the fourth component. उसके बाद हम बात करते हैं fifth, very important, respiratory effort. ठीक है, अब जब हम respiratory effort की बात करें, let me make it clear once again, this is not the respiratory rate, this is the respiratory effort of the baby, ठीक है. और इसको हम किसके टर्म्स में ले रहे हैं, वी आर टेकिंग इट इन द टर्म्स ऑफ क्राई ऑफ द बेबी, राइट. अगर बेबी क्राइज आउट लाउड, इफ द बेबी क्राई आउट लाउड, बहुत अच्छे से क्राई कर रहा है, मींस उसका लंग एक्सपेंशन प्रॉपर हो पा रहा है, देन द रेस्पिरेटरी एफर्ट इज वेरी गुड, गिव द स्कोर ऑफ 2. एंड इफ द क्राई इज वीक, वीक क्राई मींस यू हैव टू गिव द स्कोर ऑफ 1. रेस्पिरेटरी एफर्ट इज प्रेजेंट बट इट इज नॉट वेरी गुड, राइट. एंड इफ द बेबी इज नॉट क्राइंग एट ऑल, if there is no cry, that means there is no respiratory effort, give the score of 0. ठीक है, तो ऐसे करके हम इन पांचों कंपोनेंट्स को असेस करते हैं इन द टर्म्स ऑफ अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेस, एक्टिविटी और द मसल टोन, एंड फिफ्थ द रेस्पिरेटरी एफर्ट. मैक्सिमम स्कोर हर कंपोनेंट में 2 होता है, मिनिमम 0 होता है. वी हैव इन टोटल 5 कंपोनेंट्स, सो व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्कोर, राइट. द मैक्सिमम स्कोर, द टोटल स्कोर कम्स आउट टू बी 10, because each component has maximum score of 2 and we have 5 components, so the total score comes out to be 10. अब कितना मिनिमम स्कोर हो सकता है इसमें, मिनिमम स्कोर तो 0 ही हो सकता है, ठीक है. अब when we say the baby has no depression, if the score of the APGAR is between 7 to 10, that means the baby has no depression, ठीक है. mild का मतलब होता है 4 to 6 and severe depression is 0 to 3. अब कब असेसमेंट करनी है, primarily the APGAR scoring is done at 1 minute after the birth and 5 minutes after the birth, ठीक है, 1 minute and 5 minutes after the birth. So this was all about the APGAR scoring. I hope this video was informational to you. Thanks. Do subscribe for more. Thank you.